Hello dear students, welcome to English class. So yesterday we read lesson The Case of the Missing Necklace, lesson number 9 of your book Roots and Wings. Today we are going to do the question answers of the lesson. So I hope you have read the lesson again carefully. So let's start the question answer. Question A, answer the following questions orally. These kinds of questions are very short. These are short question answers. Okay. First question. Where did Vidhi and her friends live? Where did Vidhi and her friends live? वो कहाँ रहते थे? विधि और उसके friends. So see the question formation. First of all, see which tense is used in the question. Did. Interrogative sentence did. It means simple past tense. Whenever we give answer to a question which is in simple past tense, we always used past second form while writing answer. Okay. So answer is Vidhi and her friends lived. In place of live, we will use second form of live because we are removing did. Did को हटाकर हम क्या यूज करेंगे? Lived. जब भी क्वेश्चन में did होता है तो did को रिमूव करके आंसर लिखते हुए did को रिमूव करेंगे और जो हमारी मेन वर्ब है उसकी हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. सो वेयर डिड दे लिव? कहाँ रहते थे? इन अ 20 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग. कि कौन सी बिल्डिंग में? 20 स्टोरी, 20 मंजिली. So Vidhi and her friends lived in a 20-story residential building. Okay, next question. What was the breaking news about? कि जो breaking news Vidhi watched on the television, what was about that? किसके बारे में थी वो? The breaking news was, यहाँ पे was लगाएंगे, was about the theft of a necklace which was a part of the Belgium's कलेक्शन फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम. ठीक है, तो कहाँ किसके बारे में थी? जो नेकलेस चोरी हुआ था, थेफ्ट हुई थी, जो चोरी हुई थी नेकलेस की, उसके बारे में था. एंड इट वाज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $12 मिलियन. कितना था? $12 मिलियन उसकी जो प्राइस था, वर्थ था. क्वेश्चन नंबर 3. What was the reward announced for the person who would provided information about the missing necklace? To write the answer of a question is not tough. It is asking how much amount was decided for the reward. जो अगर नेकलेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उसे बताता है, तो उसके कितना रिवॉर्ड जो है अनाउंस किया गया था. सो आंसर इज देयर इन book only on the very first page of the lesson. A reward of 10 lakh rupees would be given to the person providing any information about the thieves or about the theft. So you can write answer your own. आप खुद भी आंसर लिख सकते हैं. Okay. Every answer is there in book only. Next question. Why was the bearded man upset when he rushed down in the lift? The bearded man, who was the bearded man? The criminal, the thief. जो चोर था, जो अपसेट क्यों था? When he rushed down in the lift, जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था. What happened there? The bearded man was upset because when Vidhi saw that man, Vidhi winked her eyes टूवर्ड्स नजमा, और नजमा ने क्या करा? भागने की एक्टिंग करी और गिरने की भी एक्टिंग करी. शी प्रिटेंडेड टू फॉल एंड उसकी वजह से वो आदमी भी गिर गया, जिसकी वजह से ब्रीफ केस ओपन हुआ और उसकी सारी चीजें उसके सामने आ गई. जो नेकलेस था वो भी बच्चों के सामने आ गया. सो दैट्स व्हाई ही वाज अपसेट. ओके, द बियर्डेड मैन वाज अपसेट बिकॉज व्हेन ही फेल हिज ब्रीफ केस ओपन्ड and its content or the belongings of the man was scattered in front of Vidhi and Najma. Among the objects on the floor, there was the stolen necklace also. उन objects में, उसके सामान में, उसकी things में और क्या था? Stolen necklace भी था. So that's why the man was upset. Question number 5. What did Najma notice when she saw the bearded man with the briefcase? अब नजमा ने क्या नोटिस करा जब ब्रीफ केस गिरा और
उसका सामान बिखर गया, देन व्हाट डिड नजमा नोटिस? बताइए. नजमा नोटिस दैट द मैन वाज कैरिंग अ गन इन हिज पॉकेट. ओके. Question number 6. What did Vidhi do after running back to her flat? Just after running back to, she dialed the number. First of all, she called to the watchman on the gate of the building, and after getting all the details of the car and the number and the color of that car, she dialed the number that was 200, that helpline number, and gave the number of the car and color of the car to the person who was listening her on the phone. Okay. Next question. Why were Vidhi and Najma praised? उन्हें क्यों प्रेज किया गया? Vidhi and Najma were praised for their presence of mind and courage. जो उन्होंने इंटेलिजेंस दिखाई, जो हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया, उसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रेजिंग मिली. प्रेजिंग यानी प्रशंसा. Okay, so let's move to tick the correct. First question. Vidhi and her friends decided to play in the corridor because, very easy question, it was raining outside. Okay, it is mentioned in the very starting lines of the lesson कि भाई बाहर बारिश हो रही थी, that's why they started playing in the corridor only. Okay, so second MCQ. The bearded man opened the door and shouted at the children. Why did he shout at the children? Because क्या वो बच्चों से नफरत करता था? He hated children? No. The children had spoken to him rudely. क्या बच्चों ने उससे गंदे से बात करी थी? No. They were disturbing his sick mother. क्या उसकी मदर को डिस्टर्ब कर रहे थे? No. Second option is the right answer. He was getting disturbed. कि वो उनकी जो शोर बच्चों का आ रहा था उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा था. So second option is the right option. Third. Vidhi got suspicious about the new tenants on her floor when. अब विधि को कब शक हुआ? न्यू टेनेंट्स जो रहने आए थे वहां पे, उन लोगों के बारे में कब शक हुआ विधि को? When she heard loud voices from their flat discussing some escape route and the necklace. जब जो कुछ बातें कर रहे थे नेकलेस के बारे में और वहां से बचने के रूट के बारे में, एस्केप रूट की बचने का रास्ता कुछ वो सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे. देन विधि गॉट सस्पिशियस अबाउट द न्यू टेनेंट्स ऑन हर फ्लोर. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट सी. So dear students, let's discuss the question answers of part C of lesson 9. Our first question is, describe the man who shouted at Vidhi and her friends. So the man was the thief. We are to describe the appearance of that man according to the lesson. In the lesson it was told the man who shouted at Vidhi and her friends was huge, बड़ा सा था, and he had red eyes and a thick beard and he was dressed in black. कैसी आईज थी उसकी? रेड आईज थी और उसकी ड्रेस कैसी थी? ड्रेस was black. So in this manner you can describe the man that he was huge, he had red eyes and a thick beard and he was dressed in black. Let's move to the next question. Why were the police clueless about the necklace? Means why did not the police have any clue for the theft? चोरी के लिए उन्हें कोई क्लू क्यों नहीं मिला था? The police were clueless because the CCTV cameras had been disconnected by the thieves. क्योंकि thieves थे, जो चोर थे, उन्होंने पहले ही CCTV कैमरा को क्या कर दिया था? डिस्कनेक्ट कर दिया था. Let's move to third question. Why did Shubham doubt Vidhi? When Vidhi told Shubham everything, that these are the thieves and they had that missing necklace, then Shubham started laughing at the girls. And what did Shubham say? You girls are going to catch the thief. तो उसने उसका बहुत मजाक बनाया था उन गर्ल्स का. आफ्टर दैट विधि और नजमा को बहुत गुस्सा भी आया था. सो वाई डिड, उसने ऐसा क्यों किया था?
Shubham doubted Vidhi because he felt girls were not capable of planning, कि girls planning नहीं कर सकती हैं, and did not have the courage, ना उनके पास हिम्मत है, और an alert to catch the thief, और ना ही वो इतनी अटेंटिव हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि वो थीव्स को कैच कर पाए, चोरों को पकड़ पाए. So Shubham doubted Vidhi because he felt girls were not capable of planning and did not have the courage or an alert to catch the thief. Let's move to next question. Question number 4. Describe what happened when Vidhi purposely fell on the bearded man's feet. After talking to Shubham, when they were returning, they saw that thief with the briefcase. The man was going towards lift. Okay, so in this way, Vidhi winked at Najma. तो Vidhi ने Najma को इशारा किया. Okay, then Vidhi fell on the floor. तो Vidhi कहाँ गिर गई? फ्लोर पे गिर गई, जहाँ पे वो bearded man था. And then what happened? उसके बाद क्या हुआ ये बताना है. वो पर्पसली गिरी थी ना, वहाँ पे जानबूझकर गिरी थी वो. When Vidhi fell on the bearded man's feet, the briefcase slid across the floor and fell open. तो briefcase कहाँ गिर गया था? फ्लोर पे गिर गया था और ओपन हो गया था. Everything in it was scattered. जो भी कुछ उसमें था वो बिखर गया था, इंक्लूडिंग द स्टोलन नेकलेस. और उसमें स्टोलन जो नेकलेस था वो भी जो है जमीन पर गिर गया था, फ्लोर पर गिर गया था. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What things were there in the briefcase? What were there in the briefcase? According to lesson, you can give answer. The briefcase contained a camera, stationery. Stationery means pencil, eraser, scale, pens. So all these are your stationery. Pamphlets. Pamphlets क्या होते हैं? मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपना पैम्पलेट तैयार करता है, यानी कि अपना नेम लिखता है वहाँ पे. एक सुंदर सा जो आप देखते हो ना न्यूज़पेपर में बहुत सारे पैम्पलेट्स आते हैं, फिर वो इंस्टीट्यूशन अपना नाम लिखता है, अपने जो अचीवमेंट्स है वो बताता है, और वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं वो बताता है. तो उसके लिए हम एक पैम्पलेट तैयार करते हैं. तो कुछ पैम्पलेट्स थे वहाँ पे, अ डायरी एंड द स्टोलन नेकलेस. और क्या था वहाँ पे? स्टोलन नेकलेस था. सो द ब्रीफकेस कंटेन्ड अ कैमरा, स्टेशनरी, पैम्पलेट्स, अ डायरी एंड द स्टोलन नेकलेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वर द थीफ एंड हिज accomplices nabbed? थीफ और उसके साथी accomplices जो उसको कंपनी कर रहे थे, उसके साथी को कैसे पकड़ा? विधि got the color and the number of the thief's car. विधि को थीफ की कार का नंबर एंड कलर कहाँ से लिया उसने? गार्ड से, was on duty on the gate, at the gate of the building. Okay, so she then gave this information to the helpline 200, जो वो helpline number था 200. After getting that color and the number of the thief's car, she dialed the helpline number 200 so the police could nab the thief. And after getting information, the police were able to catch the thief, to nab the thief. And after that, the police catched his accomplices also from the fifth floor of the building. So dear students, these are the answers. You can write these answers yourself also in your own language, no issue. And if you want to write from here, you can write from here. And if you have any doubt, you can ask me writing in the comment box. Thank you.